part of the Airblack beauty journey, and I'm so happy to be back on such an important day in all the girls who are here in their lives because this is their graduation ceremony. And I think जो Airblack beauty कर रहा है is such a great initiative क्योंकि ऐसी चीज I don't think किसी ने भी इंडिया में अभी तक करी है where Airblack beauty has 230K members. I mean, that number is simply awesome. I mean, and with 50,000 live hours of makeup teaching, I think Radhika, you guys have come a long way and you guys have done it just so brilliantly. अभी मैं students की भी बात सुन रही थी and I'm so happy to hear everything so positive. And I hope Airblack Beauty continues to keep growing. And it's amazing to know कि students ने 30 unique looks सीखे हैं from Yes. their educators and mentors. And I'm sure इन लोगों की learning level बहुत ही आगे चली गई है. And of course, this is just the beginning, girls. And there's a long way to go. But of course, you have already taken the step ahead. And I wish you everyone the very, very best. Thank you so much, Annie, for your kind words. Now let's talk about your journey. So can you take us through your journey? Of course, Radhika. So hi everyone, मेरा नाम Chandni Singh है and I've been a makeup artist for the last 18 years now. मैं वैसे originally लखनऊ को belong करती हूँ, but I'm based in New Delhi and Noida. And मैंने तब मेकअप आर्टिस्ट्री करनी सीखी थी तब मैंने मेकअप आर्टिस्ट्री करनी स्टार्ट करी थी जब इट वाज नॉट अ पॉपुलर प्रोफेशन एंड ऑफ कोर्स घर वालों को तो कुछ समझ ही नहीं आया था कि ये क्या प्रोफेशन है, ये क्या जॉब है, यू नो. एंड माय फादर वुड ऑलवेज बी लाइक कि यू हैव लॉस्ट इट, नहीं ये मैं तो सुना ही नहीं है कि ऐसा क्या है इसमें, हाउ आर यू गोइंग टू मेक मनी इसमें, how can you build a name and everything. And today when I look back and my father also, I mean, I still remember when one of his friend's daughter told him that how much she loved me and my makeup and I was so famous and everything. My dad was so proud and he called me back saying that I can't believe it, you've come such a long way. So yes, it's been a very fruitful journey. I'm very grateful to God where I am today. In fact, girls, मेरे टाइम पे एयरब्लैक जैसा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं होता था जहां पर सीखने को मिलता था. और इनफैक्ट तब कोई ऐसे इंस्टीट्यूट थे भी नहीं जो मुझे इंस्पायर करते थे कि मैं उनको ज्वाइन करूं. सो आई एम अ सेल्फ टॉट आर्टिस्ट और मैंने बहुत मेहनत करी है टू बी हियर. एंड आई एम प्रूफ कि अगर आप हार्ड वर्किंग हैं, अगर आप डेडिकेटेड हैं और अगर आप पैशनेट हैं, नाउ यू हैव ऑल द एजुकेशन. एंड अगर आपको इतने सारे एजुकेटर से इतनी सारी नॉलेज मिली है, you should take all that knowledge together and you have to work towards building your own makeup style. Lovely. Thank you so much, Chandni, for sharing your journey with us. Now, everyone, अगर आपके पास भी कोई सवाल है जो कि आप चांदनी जी से पूछना चाहेंगे, आप चैट पे लिख सकते हैं, हम उनमें से कुछ लेंगे. But my next question is that Chandni, they have all learned several looks, like 30 unique looks and everything. Now, if they want to start their career, then how should they attract their clients? How can they attract more clients? देखिए, I mean, I started my journey so many years back. तब भी मैंने यही किया था और अब भी मैं वही बोलूंगी कि आपको पहले आपका काम अपने इमीडिएट सर्कल से स्टार्ट करना है, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स. एंड मेरे पास कई लड़कियां आए जो मैसेज करती हैं कि अरे रिलेटिव्स तो बुक ही नहीं करना चाहते हैं, फ्रेंड्स इग्नोर करते हैं. सिर्फ दैट इज योर थिंग. आपको काम करना है आपके सोशल मीडिया प्रेजेंस पे. आपको शूट्स करने पड़ेंगे, मॉडल्स के मेकअप करने पड़ेंगे, मॉडल्स को हायर करना पड़ेगा, एक पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत जरूरी है एज अ बिगनर टू शो पीपल दैट यू हैव द स्किल टू डू ब्यूटीफुल मेकअप एंड नेल इट एवरी सिंगल टाइम. एक मेकअप आर्टिस्ट्री में एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है राधिका इज दैट यू हैव टू मेक अ फेस लुक परफेक्ट ऑलवेज. लाइक बेशक उनकी स्किन खराब हो या पिगमेंटेशन और डिस्कलरेशन बहुत ज्यादा हो, डार्क सर्कल्स हो, आईब्रो में कट हो, लिप में कट हो, द थिंग इज दैट यू हैव टू मेक इट लुक एज परफेक्ट. सो यू नीड टू स्टार्ट विद अ गुड सोशल मीडिया पेज. आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए एंड आपको धीरे धीरे दिखाना है कि आपका पर्सनल मेकअप
स्टाइल क्या है। हम सारे मेकअप आर्टिस्ट का एक बहुत डिस्टिंक्टिव स्टाइल होता है। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे भी जाएंगे, यू विल सी सम थिंग्स लाइक आई एम अ बिग फैन ऑफ ब्यूटीफुल ड्यूई स्किन। मुझे मिनिमलिज्म बहुत ज्यादा पसंद है, एंड वो क्लियरली मेरे पेज पे दिखता है। सो राइट नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज क्रिएट योर ओन स्टाइल एंड पुट इट अक्रॉस टू द वर्ल्ड कि आपकी ब्लेंडिंग स्किल्स कितनी अच्छी हैं, आपके कलर एस्थेटिक्स कितने अच्छे हैं। एंड गर्ल्स प्लीज याद रखिएगा दैट एवरीथिंग इट्स जस्ट नॉट अबाउट मेकअप। आप वो पूरा लुक कैसे, हाउ डू यू पुट इट टुगेदर, राइट फ्रॉम द हेयर, ज्वेलरी, सेटिंग, ड्रेपिंग, एवरीथिंग इज गोइंग टू काउंट, बिकॉज एक क्लाइंट जब आपके पेज पे आता है वो पूरा लुक देख रहा होता है। सो यू नीड टू वर्क वेरी हार्ड एंड यू नीड टू स्टार्ट राइट अवे। Thank you so much, Annie, for the answer. And now, as you said, that they have to keep up with their social media game, and like how important it is nowadays, like being on social media and being active there. So what advice would you give them to keep their game strong, to, attract more people towards their page? सो गाइस, जो एक चीज, ये एक कड़वा सच है, बट द ट्रूथ रिमेन्स कि एक मेकअप आर्टिस्ट बनने के लिए आपका इन्वेस्टमेंट एक कोर्स के अलावा और आपके मेकअप प्रोडक्ट्स के अलावा, जो मैंने आपको बोला, सोशल मीडिया की तरफ भी एक पूरी प्लानिंग होती है। लाइक मेरे पास एट एनी गिवन पॉइंट 3 महीने का कंटेंट रेडी होता है। लाइक मुझे पता है कि मैंने अपनी फलानी ब्राइड का फोटोग्राफ अगला लगाऊंगी, उसके बाद ये लगाऊंगी। और मैं भी काफी मॉडल शूट्स अभी भी करती हूँ, क्योंकि मैं जब नए प्रोडक्ट्स खरीदती हूँ, मेरे को, मैं उनको डायरेक्टली क्लाइंट पे कभी भी यूज नहीं करती हूँ, बिकॉज आई वांट टू बी वेरी श्योर कि वो रिजल्ट दे रहे हैं या नहीं। तो मैं मॉडल्स को बुलाती हूँ, उनके ऊपर नई आई शेडो टेक्निक्स, न्यू कलर्स, न्यू पिगमेंट्स, न्यू फाउंडेशन ट्राई करती हूँ। सो आई हैव अ फुल सोशल मीडिया प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी कि इसके बाद मैं ये लगाऊंगी। एंड मैं एक बहुत राधिका कॉन्शियस एफर्ट करती हूँ कि मैं रिपीटेड लुक्स, लाइक ओके नाउ, एक ब्राइडल लुक में जो कंसिस्टेंसी होती है कि ज्यादातर हम लोग गोल्डन ब्राउन आईज विद ग्लिटर, विद लैशेस, विद रेड लिप्स और न्यूड लिप्स बहुत करते हैं। सो आई ऑल्सो मेक श्योर कि मैं सेम और सिमिलर लुक्स रिपीट ना करूं। अगर मैं एक ब्राइड लगाती हूँ रेड में, फिर देन आई मेक श्योर आई डू अ ब्लैक स्मोकी आई, उसके बाद मे बी आई विल डू समबडी विद अ विंग आईलाइनर टेक्निक। सो थोड़ा सा आपको वर्सिटैलिटी भी दिखानी है अपने पेज पे, राइट? एक सिग्नेचर लुक होता है दैट सिग्नेचर, एंड you know girls, it's not about keeping the makeup strong or keeping the makeup loud. If you like strong sculpted looks, make sure you put it across on your page that that is your forte. Lekin at the same time, make sure you do a little bit of the other things also, because you need to have all kinds of clients to grow in the long run. Definitely. Thank you so much, Annie, for the answer. Before I move forward with one of my question, I think Sony has a question. And I think all those who learn very recently, they always have this question. So Sony says, मैम start करने में बहुत डर लगता है, जो डर है उसे कैसे करें, उस डर को कैसे हैंडल करें और उसे सही वे में कैसे चैनलाइज करें? तो सोनी, जो सबसे जरूरी है कि आपको ना बहुत लाइक यू हैव टू गिव इट योर 100%। लाइक मुझे ये भी लगता है कि आज की डेट में अगर आप फोकस के साथ काम नहीं करेंगे, आप बेशक कुछ भी करिए, यू कुड बी वर्किंग इन अ प्रिंटिंग फैक्ट्री, यू कुड बी अ नर्स, यू कुड बी अ ड्राइवर, यू कुड बी अ नेल आर्टिस्ट और अ टैटू आर्टिस्ट। आपको फोकस के साथ काम करना, आपको अपने आप को पुश करना है टू पुश योर बाउंड्रीज एंड मूव आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। मुझे ये भी लगता है कि पेरेंट्स का कॉन्फिडेंस जीतना बहुत जरूरी है, ताकि वो भी आपको और भी ज्यादा एनकरेज करें, सो दैट दे कैन शो यू मोर फेथ। तो सोनी, थोड़ा सा आपको अपना मन बनाना पड़ेगा। मैं स्टूडेंट्स को ये भी बोलती हूँ कि यू मस्ट प्रे अ लॉट। मेडिटेशन करने से भी स्ट्रेंथ ऑफ द माइंड बहुत अच्छा है। आपको नेगेटिव थॉट्स को पीछे करने पड़ेंगे, एंड उसके लिए पॉजिटिविटी रेडिएट करना बहुत जरूरी है। बी विद पीपल हु आर पॉजिटिव, हु एनकरेज यू, जो आपको नीचे नहीं दिखाते हैं, जो बार बार आपको अपनी कमियां नहीं दिखाते हैं। ऑफ कोर्स एट द सेम टाइम आप में वो विजडम होनी चाहिए कि हाँ, मुझे पता है कि मुझे अपनी इस स्किल पे काम करना है। आप मेकअप आर्टिस्ट हैं, मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ, आप और मैं दोनों जानते हैं कि इवन समथिंग लाइक अ विंग आईलाइनर लगाना कितना मुश्किल काम है। लाइक
मेरे को अभी भी याद है, मेरे को 1.5 साल लगा था टू गेट माई हैंड रियली गुड एट इट, एंड आई थिंक इट टुक मी ऑलमोस्ट 3 years टू मास्टर इट परफेक्टली, जहां पर मेरे को डर लगना बंद हो गया था, राइट? अब जस्ट बिकॉज डर लगता है इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो नहीं करना है। ऑफ कोर्स यू विल हैव टू मूव आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, तो सराउंड योरसेल्फ विद गुड पीपल। आप उन आर्टिस्ट का काम देखिए जो आपको इंस्पायर करते हैं आपकी मेकअप आर्टिस्ट्री को और ऊपर ले जाने के लिए। Definitely. Thank you so much for the answer. I think we have one more question from the chat we'll take up and then we'll move forward with the other questions. Ritu says कि मैम समझ नहीं आता कि start कहाँ से करें, like अगर वो आज भी graduate हो रहे, so what should be the next step today? तो जैसे मैंने बोला, आपको आपकी इमीडिएट सर्कल से स्टार्ट करना है, अपने फ्रेंड्स को ड्रेसअप करना स्टार्ट करिए, अपने रिलेटिव्स को आप उन लोग को टेल देम दैट अगर आप कहीं बाहर जाते हो प्लीज कॉल मी, मैं आपको आके तैयार करूंगी, आप मेरे पास आना, मैं आपको तैयार करूंगी। थोड़ा सा आपको आई मीन, एंड हु वुडंट वांट इट। इनिशियली गर्ल्स डोंट इवन थिंक अबाउट द मनी, क्योंकि एक नॉलेज रिसीव करने के बाद अगर आप उस नॉलेज को प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो यू विल नॉट बी एबल टू गेट टू फार। रिमेंबर, आर्टिस्ट्री है, जितना आप इसको प्रैक्टिस करेंगे उतने आपकी हाथ में सफाई आएगी। और वो जो लाइक अ क्लीन मेकअप, वो जैसे वो पिक्चर करता है ना, व्हेन द आई मेकअप इज परफेक्ट, अगर आपका शैडो एंड लाइट का कॉन्सेप्ट क्लियर है, यू वुड अंडरस्टैंड कि द आई मेकअप डज नॉट हैव टू बी लाउड फॉर इट टू लुक ब्यूटीफुल। यू कैन यूज द सॉफ्टेस्ट ऑफ कलर्स, बट क्योंकि आपकी टेक्निक ठीक है, so go ahead and start from your immediate circle, your friends, your family. एक सोशल मीडिया पेज आपको बिल्ड करना है, एंड गर्ल्स कंसिस्टेंसी, ये नहीं कि आपने एक फोटो आज लगाई और दूसरी फोटोग्राफ आप 10 दिन के बाद लगा रहे हो। एक आपको कंसिस्टेंसी का पैटर्न डेवलप करना पड़ेगा, यू नो एंड अच्छा कंटेंट लगाना, उस पे आपको वर्क करना पड़ेगा। इवन दिस इज, आई बी वेरी ऑनेस्ट, दिस इज गोइंग टू बी अ लाइक एन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि another feel like lighting is very important for the right kind of images. You can also start looking out to assist other people अगर आप और भी अपना नॉलेज बढ़ा। Chandni, actually you're on mute. असिस्ट और इंटर्न करके आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। सो जस्ट मेक श्योर यू कीप डूइंग समथिंग। सो मेक श्योर यू कीप डूइंग समथिंग और द अदर, क्योंकि अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी, इफ यू डोंट स्टे इन टच, एंड यू ऑल्सो हैव टू रिमेंबर कीप अपग्रेडिंग योर स्किल्स गर्ल्स। लाइक आपने जो सीखा है उसको आपको और भी नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। Definitely. Thank you so much, Chandni, for the answer. Now, as you mentioned that, you have your particular niche, which is very minimalist and very dewy. So, as I said, that they have done 30 unique looks, and for them to figure out what is their niche. So, how can one pick up their niche? Like, उनको कैसे पता चलेगा कि उनका किसमें मास्टर उन्हें करना चाहिए? मुझे लगता है कि आप जो अपने फर्स्ट 10-12 मेकअप्स करेंगे, आपको बाय और 5th-7th मेकअप आपको एक खुद पता चल जाएगा कि आप क्या पसंद करते हैं। लाइक आर यू somebody who likes to do like very dramatic big beautiful eyes, or do you like to do strong highlight and contour techniques? ये आपको तभी पता चलेगा जब आप मेकअप करना स्टार्ट करोगे। लाइक अनदर थिंग आई रियली लाइक टू डू इज अ गॉर्जियस फिंगर लाइनर, एंड आई एम सो लाइक, मैं आपको बता नहीं सकती मेरे को कितनी खुशी होती है जब मैं अपनी क्लाइंट का परफेक्ट फिंगर लाइनर लगाती हूँ और उसका मैं, एंड like I take a close up from this. You'll see a lot of extreme close ups on my Instagram page, and आपको थोड़ा सा, जब तक आप काम नहीं करोगे आपको भी नहीं पता चलेगा कि आपका पर्टिकुलर स्टाइल क्या है। लाइक आई पर्सनली प्रेफर यूजिंग अ लॉट ऑफ ब्राउन ऑन इंडियन स्किन। मुझे लगता है कि वो जैसे इंडियन स्किन को कॉम्प्लीमेंट करता है, एंड ऑफ कोर्स मैं जब तक काम नहीं करने वाली थी मुझे कैसे पता चलता। लाइक आई यूजली स्टे अवे फ्रॉम वेरी कलरफुल मेकअप्स। लाइक मुझे एक बहुत ही ब्यूटिफुली बैलेंस्ड लुक पसंद है। तो यस, काम करिए और आपको भी पता चल जाएगा बाय योर 7th-8th मेकअप कि आप क्या पर्सनली प्रेफर करते हैं।
Definitely. Thank you so much, Chandni, for the answer. Now, Shreya has a question, and I think a lot of them would be having this question. At starting, like, how do they allocate their budget, because they are not earning right now? Like some of them, they have just learned it, and products are expensive. They could be expensive. So how should they manage the amount? I mean, you are talking amount in terms of what they need to be charging in the market? No, like, how in terms of like buying products, how much they should buy, like how much they should spend on makeup if they are not Okay, earning from like it that. as of now. सो नाउ गर्ल्स, ये वही बात आ गई है कि एक इन्वेस्टमेंट, कोई भी करियर हो, बेशक इफ यू आर ट्राइंग टू बी एन इंजीनियर और यू ट्राइंग टू बी अ डॉक्टर, आपको कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करनी है, एंड दिस इज एग्जैक्टली वेयर दिस कम्स इन। मुझे ये भी लगता है कि आजकल जो इंफॉर्मेशन ऑन सोशल मीडिया एंड इंटरनेट है अबाउट मेकअप प्रोडक्ट्स, लाइक एवरीबडी इज सो अवेयर ऑफ इट। एंड अनफॉर्चुनेटली एक जो सैड पार्ट है राधिका, वो ये भी है कि कई क्लाइंट सोचते हैं कि अगर आपकी मेकअप किट बहुत अच्छी है तो आप मेकअप बहुत अच्छे से जानते हैं। Your skills might be average, but they just get impressed by the kind of products they use. So this is, I will say, a kind of an investment that you need to make. पर मैं ये जरूर कहती हूँ, जैसे मैं भी एट माई प्रोफेशनल मेकअप अकेडमी में स्टूडेंट्स को एक किट बना के बताती हूँ कि आपके पास ये 6 अगर फाउंडेशन है, यू आर सॉर्टेड फॉर द लाइटेस्ट टू द डार्केस्ट स्किन। रिमेंबर, आपके पास कोई भी कलर का स्किन आ सकता है, एंड यू नीड टू हैव एवरी शेड इन योर किट, विच डज नॉट मीन कि अगर लाइटेस्ट शेड नंबर 1 है और डार्केस्ट शेड नंबर 30 है, यू नीड टू ओन ऑल द 30 कलर्स, राइट? सो कौन से फाउंडेशन जोन करने हैं, कौन से अंडरटोन्स आपकी किट में होने चाहिए, और अगर लाइट आ जाए तो कौन सा कलर ज्यादातर हेल्प्स यू क्रिएट दैट लाइट कलर। So I'm sure you have learned a lot about color theory and creating your own shade. So this is one thing that you can do. Your basic skin colors have to be in place. मुझे ये भी लगता है कि अगर आपके पास एक वार्म न्यूट्रल पैलेट हो, पिंक्स में पैलेट हो, एक कलर्ड पैलेट हो, एंड एक पैलेट जिसमें ब्राइट कलर्स लाइक ब्लू, ग्रीन, पर्पल, हॉट पिंक, these are the ग्रे, सिल्वर्स, अगर आपके पास बेसिकली 4 पैलेट्स हो, यू कैन एक्चुअली डू अ फुल मेकअप। ये इन्वेस्टमेंट कभी खत्म नहीं होगा, बट दिस इज समथिंग दैट यू विल हैव टू टेक अ प्लंज, क्योंकि एज मैंने बताया, क्लाइंट थोड़ा स्पॉइल्ड भी है आज की डेट में। अगर आप उनको 1 लाख स्टाइल दिखाते हो, कहते हैं और नहीं है, तो दिस इज एन इन्वेस्टमेंट यू नीड टू डू। मैं भी क्या करती थी, लाइक आई स्टिल रिमेम्बर व्हेन आई यूज्ड टू मेक, अगर मैं 2,000 रुपए कमाती थी, मैं जाके 1,500 रुपए का सामान खरीद लेती थी। Every time I would make a little bit of money also, I would go and spend 75 to 80% of on it, and maybe buy 1 or 2 products. And of course, मैंने अपने husband से help ली थी to buy some products initially, and I still remember उसके बाद मैंने उनसे कभी भी पैसे नहीं लिए। So I mean, it's a slow process, but it's not impossible, and you have to be very wise about कि ये मुझे मेरी kit में चाहिए, right? Like colored contacts has become another very important thing. Client चाहता है देखना कि आपके पास light gray है, dark gray है, medium gray है, green है, वो है। So yes, this is an investment, Radhika, that they need to make. Definitely. With before we move forward with another question, we also have one question from Sony, and I think this question is sort of relevant. I mean, all of them are, but like she asked that कि अगर हमारा जो हमारी creativity है वो अच्छी है, but like हमारी personality में वो नहीं आ पा रहा है, like maybe if you're fat or maybe you're small, like how do we build up that personality that the other person will also convince, वो other person वो भी impress हो हमारी personality से and हमारी creativity से, skill से, और how important is it? जहां तक मुझे लगता है कि आपके मोटे होने से, पतले होने से, सांवला होने से, आपकी स्किन पे एक्ने होने से, वो आपकी आर्टिस्ट्री को डिफाइन नहीं करता है। मैं स्टूडेंट्स को बस बोलती हूँ कि व्हेन यू गो टू अ क्लाइंट, बी वेल ग्रूम्ड। वेल ग्रूम्ड का मतलब ये नहीं है कि मैं किसी भी क्लाइंट के आगे पूरा मेकअप लगा, इनफैक्ट ये भी मैं इससे भी कम मेकअप लगा के जाती हूँ। लाइक आई जस्ट कवर अ लिटिल बिट ऑफ डार्क सर्कल, मेरी आईब्रोज फिल्ड होती हैं, एक हल्का सा न्यूड लिपस्टिक लगाया होता है मैंने, मस्कारा या आईलाइनर लगाया होता है। आई जस्ट मेक श्योर दैट आई एम स्मेलिंग गुड, मेरे नेल्स क्लीन होते हैं, आई एम ऑलवेज लाइक, आई ऑलवेज हैव परफ्यूम। हमारा
हाथ कितना क्लाइंट के पास जाता है, आई एम ऑलवेज स्मेलिंग गुड। मेक श्योर, मैं तो आई मीन गर्ल्स आर बी वेरी ऑनेस्ट, हाइजीन को लेके भी अगर आप ध्यान रखेंगे, योर क्लाइंट्स विल कीप कमिंग बैक टू यू। Corona or no corona, I have been using a mask. I still use a mask, whether corona is there or not. Hygiene को ध्यान में रखिए। बालों को, like I don't open my hair and go to do a makeup. It's always clean back. मैं makeup कर रही हूँ, my hair should not be falling on my client's face. मुझे लगता है if you are well groomed, like my shoes are clean, I'm not wearing a stained shirt, and I just wear very basic, like I'm wearing blue jeans and a black shirt or a white shirt or a jacket, nothing. I mean, just be well groomed. Like you don't have to be over the top. And अपनी like बालों को भी, अगर आपको लगता है कि आपके बाल बहुत फ्रिजी है और बहुत मेसी लगते हैं, तो एक आपको आयरन में इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं भी हल्का सा आयरन से टचअप करके जाती हूँ, सो द ओवरऑल अपीयरेंस इज लाइक नीट एंड क्लीन। मुझे नहीं लगता है कि आपके साइज से, आपके कम्प्लेक्शन के कलर से एक क्लाइंट आपको हायर करता है या नहीं। आई मीन जस्ट वेरी, एंड आई एम ऑलवेज वेयरिंग वेरी कंफर्टेबल क्लोथ्स एंड शूज व्हेन आई गो टू डू मेकअप। लाइक आई एम मोस्टली इन माय स्नीकर्स, लाइक आई एम जस्ट वेयरिंग माय टिपिकल, I'm wearing my white or black kids, nothing fancy. So just be well groomed. And अगर आपकी art अच्छी है, if your client calls you back again, that means you were really good and she liked what you did for her. Definitely. Also, we have one more question since we were talking about these other things. Priyanka is asking, is English language important for a makeup artist? Radhika, can you hear me? Yes, I can hear you. Chandni, can you hear me? Yeah. Yeah. Sorry, So I just Priyanka has a felt question. Is Hanji. English language important for a makeup artist? Not at all. Not at all. I don't feel that it's important. Chandni, you're on mute. Chandni, you're on mute. Yeah, you went on mute. अगर आपका काम अच्छा है, and if you're a thorough professional, girls, जो आप सर्विसेज एक क्लाइंट को देते हैं उसमें कोई भी अड़चन या बाधा नहीं होनी चाहिए। यू शुड ऑलवेज बी ऑन टाइम, नंबर वन। मुझे लगता है हाइजीन को लेके बहुत क्लाइंट्स आजकल टर्न ऑफ हो रहे हैं। मेक श्योर यू आर एब्सोल्युटली हाइजीनिक, इवन लाइक यू नो, लाइक आई एम वेरी एंटी, मैं कभी भी कंसीलर के क्रीम्स के अंदर उंगली नहीं डालती हूँ। आई एम टेकिंग एवरीथिंग आउट विद द स्पैचुला। मैं, अगर आप मेरा इंस्टाग्राम पेज देखेंगे, यू विल नेवर सी मी टेक अ कंसीलर and apply directly to the face. Like I'm very particular about, I'll take it out on a plate and then I'll apply it on my client's face. मेरे brushes, मैं कभी भी client के आगे brushes clean नहीं करती हूँ, घर पे साफ करके जाती हूँ। और client के आगे भी, in between makeups also, I'm constantly sanitizing them. So like also your hair, like मुझे ये भी लगता है कि your hair team needs to be very strong. हेयर स्टाइलिंग आजकल और भी कॉम्प्लिकेटेड मुश्किल हो गई है। क्लाइंट को आपका मेकअप पसंद आएगा, बट मे बी शी माइट नॉट बुक यू अगेन बिकॉज योर हेयर स्टाइलिस्ट इज नॉट गुड, राइट? सो मेक श्योर योर, if your services are on point, your draping was on point, everything, उसका मेकअप नहीं हटा, उसके बाल नहीं खुले, उसके कर्ल्स नहीं इधर उधर हुए, she will call you back. So you have to give 100% thorough professional services back. Definitely. Thank you so much, Chandni, for the question, for the answer. The next question is, what is your signature style and how did you come across it? So, in fact, जब मैंने मेकअप आर्टिस्ट स्टार्ट करी थी, मेरे पास बहुत लोग आते थे, तो मेरे को एक्चुअली मैंने शूट से काम करना स्टार्ट किया था। एंड मैं बहुत शूट्स करती थी, और मेरे को जो ब्राइड्स मिलनी स्टार्ट हुई, तो मेरी मॉडल मेरे को फोन करती थी कि आपने मेरा फलाना फलाना शूट पे मेकअप किया था, और माय सिस्टर्स गेटिंग मैरिड और आई एम गेटिंग मैरिड, एंड मुझे वो न्यूड मेकअप चाहिए। क्योंकि उस टाइम पे जब मैंने स्टार्ट किया था 2004 में, makeup used to be very loud. Eyeshadows were all red eyeshadows with glitter on it, with dark red lipstick. So मेरे पास बहुत लोग आते थे जो कहते थे कि हमें मिनिमलिज्म चाहिए, और मेरे को मिनिमलिज्म करने दिन
Like I used to feel so happy every time I used to do minimalistic makeup. मुझे उस चेहरे को देख के इतनी खुशी होती थी. और जब मैं बहुत loud makeup करती थी, तो I mean मेरे को ना create a satisfaction नहीं आता था फिर, राधिका. And that's when I realized कि I feel so happy to do. मेरे को ना एक beautiful balance. अगर आप मेरी पिक्चर्स भी देखेंगे इंस्टाग्राम पे, आप नोटिस करेंगे आई लव ब्यूटीफुल बैलेंस. लाइक ऐसा नहीं है कि आईज भी लाउड है, फाउंडेशन भी लाउड है, लिपस्टिक भी लाउड है. आई लाइक टू क्रिएट अ ब्यूटीफुल बैलेंस इन द क्लोथ्स, द ज्वेलरी एंड माय मेकअप. ऐसा कुछ नहीं है कि आई एम एंटी लॉन्ग लैशेस और आई एम एंटी रेड लिपस्टिक, नॉट एट ऑल. लाइक मैं अपने क्लाइंट के साथ बहुत डिस्टिंक्टिवली मैं उनके साथ पूरा एक कंसल्टेशन करती हूँ. Are there somebody who always love to wear their kajal? Are you a bright lipstick person? मेरे पास मोस्टली जो क्लाइंट्स आते हैं वो वैसे लोग होते हैं जिन्होंने जिंदगी भर कभी मेकअप ही नहीं लगाया. जिसने जिंदगी भर मेकअप नहीं लगाया, उसको आप उनकी आप वेडिंग डे पे अगर रेड लिपस्टिक में उनको ऊपर जबरदस्ती करूंगी, हाउ विल शी बी कंफर्टेबल? Remember, you have to make your client feel comfortable also. Just because you like red lipstick and she's a nude lipstick person, that does not mean that आप उनको force करें. Right? I hear them out. I understand their needs. अगर मैंने क्लाइंट का मेकअप भी करती हूँ, मुझे लगता है कि वो न्यूड लिपस्टिक से उनके बात में वो चेहरे में वो बात नहीं आ रही है, शी नीड्स अ लिटिल बिट मोर, मैं उनको बहुत प्यार से समझाती हूँ कि आई डू रेकमेंड. मुझे लगता है कि आपकी ज्वेलरी बहुत लाउड है, आपका चेहरा गुम रहा है आपके आउटफिट और ज्वेलरी में. आई डू रेकमेंड देम. मैं उनको ये भी बोलती हूँ कि आई थिंक हमें लैशेस और लंबी लगानी चाहिए. सो यस, यू हैव टू काइंड ऑफ वर्क टुवर्ड्स इट. And so I will not even say that I love extreme minimalism. I mean, I love doing soft glam looks, but I like that beautiful balance, Radhika. And yes, I will say कि I'm a fan of very glowing skin. मुझे लगता है कि एक लड़की की skin ऐसे लगनी चाहिए कि she's glowing from within. Definitely. Thank you so much, Chandni, for sharing, how did you come across your signature style? Now, my next question, and probably the last question for this whole thing, for the whole graduation ceremony, is that we often, I mean, of course, we do get love, but we also get hate along the way, be it on social media, be it a discouragement from like parents or family members or friends. So, जब discouragement या फिर hate मिलता है, तो उस hate को कैसे deal करें उस hate के साथ? So I'll be very honest, जब मुझे hate मिलता है, मैं उन लोगों को totally ignore करती हूँ. I don't know, maybe it's my age, but I have become very good with it. मेरे को फर्क नहीं पड़ता कौन क्या बोल रहा है. I should like when I put up a makeup, मुझे जैसे कभी कभी लोग, क्योंकि आप ज्यादातर देखेंगे कि मेरे उस पे nude lipsticks है ना. If my client is minimalistic client, of course you're going to see more of nude lipsticks and less of bright red lipsticks and maroon lipsticks on my page. तो अगर कोई लिखता है कि आप करते ही नहीं हो, तो मैं कहती हूँ कि यार मैं तो अपनी क्लाइंट की सुनती हूँ, and I feel very proud. Radhika, you should love what you do. I like Yes. my work. There are so many images of mine that don't go on social media क्योंकि मैं उसमें नुक्स निकाल रही हूँ, मुझे पसंद नहीं आ रहे हैं, एंड मैं नहीं लगाती हूँ उनको. क्योंकि और अगर मैंने सोशल मीडिया पे कुछ लगाया, दैट मीन्स आई हैव लाइक द लुक. एंड अनदर थिंग राधिका, लाइक मैं क्लाइंट्स का बिफोर आफ्टर नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इट्स अ वेरी रूड थिंग टू डू. इमेजिन आप किसी को पैसे दे रहे हो और वो आपका कंप्लीट जुलूस निकाल रहे हैं सोशल मीडिया पे आपका बिफोर आफ्टर लगा के. मेरे पास बहुत क्लाइंट्स इसलिए भी आते हैं बिकॉज वो कहते हैं कि अरे आप कैसे यू मेंटेन द सैंक्टिटी ऑफ अ पर्सन्स पर्सनल लाइफ. अगर किसी की स्किन खराब है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कि लोगों को चीख चीख के बता रहे हो कि अरे देखो मैं कितनी अच्छी आर्टिस्ट हूँ. लेट दैट क्लाइंट टॉक अबाउट इट टू 10,000 more people that she did a wonderful thing. So my approach to life is very different. I mean, I have blocked a lot of people also. अगर मुझे लगता है कि मुझे बहुत नेगेटिविटी आती है एक फलाने व्यूअर्स से, I just block them out. मैं argue तो बिल्कुल भी नहीं करती हूँ. I'm too busy a person to even argue with people. I don't care. So आपको आपका थोड़ा सा ढीठ बनना पड़ेगा. अगर आप अपने काम में गर्व रखते हैं, you feel proud about something that you've done and you've uploaded, go ahead and do it. And मैं तो simple, this is my page, I will upload what I like. Yes. अगर आपको नहीं पसंद है तो आप मुझे फॉलो मत करिए. you know but Radhika, I'll be also very honest कि मैं फालतू में controversies पे पढ़ती नहीं हूँ. And I highly recommend this to others also. Controversies में मत पढ़िए.
I see a lot of makeup artists जो बहुत rant करते हैं about फालतू की चीजें. I mean, अगर आप सुबह 4-5 बजे उठ के क्लाइंट के पास मेकअप करने भी जा रहे हो, इसमें इतना like you don't have to be ranting about it on social media. कि I mean, you took up an assignment, you gave a professional commitment to somebody, so you're just doing your job. Big deal. So be a thorough professional. Ignore people. Don't get into cat fights on social media. And अगर आप गलती करते हो और अगर आपका एक client आपको if she's calling you out, I think it's better to apologize. Definitely. Okay, before we wrap up and we start with the winners of like the platinum airbrush and hair or our names, I have a question and she's a student, so let's just take her question because she recently had an accident which was not very good. So she wants to know. So she was called for a function at 4 o'clock in the morning and she had to go there on her own, but she faced a little difficulties. So should she or should makeup artists give clear description that we want to be like picked up or dropped if it's like in early hours or late hours? See, I'll be very honest. If you stay in Delhi and if you're taking a makeup in Delhi, a client is not going to be very happy about giving you a pick and drop service. Of course, जब मैं travel करती हूँ out of station, I do expect. I tell my client that you need to send me a cab or I can book it myself. Whatever, मैं उनको ये भी भेज देती हूँ कि मुझे इस कैब सर्विस से इतने का आ रहा है. But in Delhi, I don't think if you are taking, even if it is 4 in the morning, a client would want to be responsible for your travel, right? So इस वे में आपको थोड़ा सा और self sufficient होना पड़ेगा, right? Like I still remember कि there used to be a time जब मेरे पास ड्राइवर नहीं होता था और मेरे को बहुत सुबह सुबह काम पे जाना होता था. तो मैं एक टैक्सी सर्विस से एक पर्टिकुलर ड्राइवर को हमेशा बुलाती थी जिससे मैं थोड़ा सा सेफ फील करती थी. सो थोड़ा सा यू विल हैव टू वर्क टुवर्ड्स दीज थिंग्स. इट्स नॉट अ क्लाइंट्स प्रॉब्लम. आई मीन उन्होंने अगर आपको पहले ही बोला हुआ है कि मुझे 7 बजे रेडी होना है, यू ऑल्सो नो दैट यू विल हैव टू बी लीविंग योर होम एट 3:54 in the morning. So you will have to become self-sufficient. Drive yourself, have a driver or have a family member drop or pick you up. आज की डेट में cab services और भी easy हो गई हैं. I also use these cabs. I use this app called Savari and I've always had a very good experience with them. The drivers are very safe. I've never been in a fishy problem. थोड़ा सा आपको आपकी सेफ्टी को लेके you have to be responsible for it. A client will not. Thank you so much, Chandni, for all the answers. We really appreciate you taking out your time and answering all the questions from Airblack and from the student itself. And thank you so much, everybody, for joining us. But before we wrap up the session, everyone, we actually have an announcement. So we have winners for airbrush, hair, and platinum. So I will be taking out the names, and if you are here, we would like to hear from you. And of course, I will be taking everybody through your portfolio. So Chandni, I will share the names with you again in the chat, and if you would like to take their names. So yes, so we for have airbrush, our winner is Priyanka Bhartia. Amazing. Congratulations, Priyanka. Great. And for hair, can you go ahead and tell the name? For hair, the winner is Ritu. Amazing, Ritu. Congratulations, Priyanka. Ritu, if you're here, do let us know. And then for platinum, can you go ahead and do the honors? The winner is Shruti Bharwe. Congratulations, girls. I'm so proud of you. Sending all my best wishes, all my love to not just the 3 winners, but each and every person who's here. Amazing. Let's go ahead and see at their portfolio. Of course, I would love to. Awesome. I'll just share my screen. If you can see my screen. Just give me a moment. Yeah, can you see this? Okay, can you give me a moment? Just a moment, I'll show my screen. We'll start with Priyanka, who is the winner for the airbrush one. So this is Priyanka. Such beautiful work. And she has completed 89 workshops. Wow. This is her work. Very, very beautiful. Amazing. Priyanka, great job done. Yes. Then we have Ritu, who has one for the hair. So this is Ritu. It's a hair work that she has done.
Oh, that's beautiful. Very nice. Radhika, the market needs good hairstylists, and I'm sure Ritu is going to do very, very well in the industry. Definitely. And then we have Shruti, who has won for the platinum. Oh, wow. That's very interesting. What has she done with the green? I love the blue eyes, also beautifully blended. Yes, I think that's one of their prosthetic looks. Oh, that's beautifully done. Amazing. This is some of her more work. Lovely. That's lovely, lovely work. Awesome. Now, everyone, we also have a very special announcement that all those Joby winners hai, Ritu, Priyanka, and Shruti, you all will be getting 500 rupees vouchers from V-Mart, and the team will be getting in touch with you. So all the best, and thank you so much again for joining us. Thank you so much, Chandni, for joining us for all your certificate-related questions, everyone. You can get in touch with the team. You can go ahead and talk to the support team, and they will be helping you all. And congratulations to the winner. Chandni, any parting words? Now, I just want to wish everyone the very best. This is just the beginning. At the same time, I just want to say that you have to overcome your fears. आपको लड़ना पड़ेगा. Remember, competition fierce है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि you cannot make a mark for yourself. I wish you all the very, very best in the world of makeup. And do follow me on my Instagram page, Chandni Singh Studio. Thank you, everyone. And thank you, Airblack Beauty, for calling me back yet again. Always so happy to be a part of your platform. Definitely. Thank you so much, Chandni, again. And thank you so much, ladies, for joining us for this session. Congratulations to all the winners. And